Asalam-o-Alikum and welcome back. So our today topic is planning and administrating classroom tests. This is unit discuss about the planning and administrating classroom tests. So our today's session will cover the following aspects. Number first is planning a test, writing supply type and select type test items. The third one is administrating a test and the fourth one is scoring a test. So planning for classroom tests, there are some steps. Our goal is improve learning and instruction. So the first one is determining the purpose. In this, you can easily clarify or define the purpose of the assessment. What do you want to measure or achieve in the classroom? And identify the learning objectives or outcome. What skills or knowledge or attitude do you want to assess? So consider the audience or the whole classroom who will be taking the assessment and what are their needs and characteristics. The second step is developing specification. So in this you can develop a specification table and outline the content, skills and cognitive levels to be assessed. And you can easily define the assessment scope, what topic, skill or knowledge areas will be covered in this specification table, and establish the assessment format. Will it be multiple choice, essay format, essay questions or long question we can say, and performance based are the combination of the both. In the third step, there is a selecting appropriate test item. So in this, you can easily choose test item that align with the learning objective and assessment specification. So select the item that are valid, reliable, and free from bias. So consider using a mix of item types such as multiple choice, short answer, or essay question in the third step. In the fourth step, there is a preparing a relevant test item. So in this, you can easily, or we can say the teacher can easily write clear and concise test items that are free from ambiguity, ensure test items that are relevant to the learning objective and assessment specification. The fourth one is assembling the test. Sorry, the fifth one is assembling the test. So in this step, you our teacher can easily organize test item into a logical and coherent order, ensure the test is balanced in terms of content, skills, and cognitive levels, and consider using a test blueprint or we can say a specification table to guide the assembly process. In the next step, or we can say sixth number, is administering the test. So in this, a teacher can develop a clear plan for test administration, including timing, location, and proctoring. Or ensure test takers understand the test format or the learners, instructions, and any rule or regulations. Consider using technology to administer the test, such as online testing platforms. The seventh is appraising the assessment and using the results. So a teacher or an instructor can easily evaluate the assessment for validity, reliability, and fairness, analyze test results to identify areas of strength and weakness, as well as use test result to inform instructions, make data-driven decision, and improve the student learning outcomes. So why test planning and administration is important? Your previous knowledge will cover this question mark. Now there is planning a test. There are three steps in the planning. The first one is pre-testing. In this, instruction at beginning, readiness and motivation, and to know about the
अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एक टीचर है और वो क्या कर रहा है, अपना जो क्लासरूम है उसमें जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि कितना उसने अचीव कर लिया अपने पढ़ाने से, या कितना उन्होंने पढ़ाया है, या उनके एज वेल एज उनके जो लर्नर है वो कितने मोटिवेट है और उन्होंने कितना लर्न किया है. द सेकेंड वन इज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन टेस्टिंग, provide basis for formative assessment, monitor learning progress, and detect learning errors, as well as provide feedback for student and teachers. इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेस पर आप देते हैं और लर्निंग का जो प्रोसेस है, उसको प्रोग्रेस है, उसको मॉनिटर किया जाता है कि जो लर्नर है वो किस लेवल पर है, आइदर दे आर वेरी फास्ट और वेरी लो, इसको मॉनिटर किया जाता है. द थर्ड वन इज डिटेक्ट लर्निंग एरर्स, यानी कि लर्नर लर्न कर रहे हैं, क्या वो एरर वो डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं. द फोर्थ वन इज प्रोवाइड फीडबैक फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स, जो आपके लर्नर का आप टेस्ट ले लेते हैं और जो लर्नर का आप फीडबैक देते हैं कि उनके क्या एरर्स थे और वो किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली टीचर जो है वो अपने आप को एवेल्युएट कर लेता है कि किस तरह उसने अपने लर्नर को मज़ीद गाइड करना है और अपने आप को किस तरह से मज़ीद डेवलप करना है कि वो इजीली अपने लर्नर तक अपना मैसेज जो है वो इजीली पहुंचाए. सो इसमें दोनों की लर्निंग जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है. द थर्ड वन इज एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टेस्टिंग. In this, measure intended learning outcome used for formative assessment and provide basis for grade, promotion, etc. यानी कि end of instruction है. End of instruction means the first one is pre-testing, the second one is during the instruction, and the third one is end of instructions. So you can easily measure the outcome or the results and use formative assessment for this, and you can easily grade the learner as well as the instructor for their promotion, etc., that they are very best teacher or they are in the learning stage. So this is a table of specification. In the previous classes we already discussed that how to develop a table of specification. There are objective content like climate, resources, population, society, and the overall total values of all these. And in the next we have knowledge, understanding, and application. So there are long answer and as well as short answer, as well as multiple choice questions, as well as the percentage at the end. So you can easily understand that how to draw a table of specification. So these are the blueprint we can say, or we can say table of specification. They have two names. Now the next is matching items. Consist of two parallel columns. Left term premises, on the right there is a responses. So tips for writing true or false question. There are keep both the columns short. And there are some instruction for that both the columns should be short. Surety for responses for all the premises, and the left column is longer, right is the shorter. Our phrase words are symbols in the shorter one. Description is numbered and option identified by letters. The next is more option for responses and then descriptions. यानी कि उसके ऑप्शन ज़्यादा होने चाहिए बजाय कि उसको मज़ीद डिस्क्राइब किया जाए. Put all the item on a single page.
ताकि जो लर्नर है या जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए वो इजी होगा कि वो अटेम्प्ट करें, उनका ओवरऑल जो कॉलम है दोनों वो सामने होंगे तो वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. लॉजिकल ऑर्डर इन रिस्पॉन्सेज, chronological or alphabetical, etc. So there is a example already given in the slide that the column A and column B, and in this we have a shorter and the longer column is already visible in the slide. That in column A there is a person who perform mysterious task on no one understand, and this is a premises, and the responses are very short or symbolic, like teacher, either facilitator, trainer, instructional designer, meeting organizers. These are the very visible or very good example for the matching items. Now there is a multiple choice question, or we can say MCQs. So three parts in this. There is the first one is the question system, body of the question, the correct answer, the key of the question, and the incorrect answer are the distractors. These are the three parts of the multiple choice question. Or the example is already given that the capital city of Pakistan is Paris, Lesbian or Islamabad or Rome. There are four options in the example. So rule for writing a multiple choice question. So the first one is use reasonable distractors. The example is already given that there are a reasonable distractor in this. Use a question format. The example is already given that the capital city of Pakistan is. So this is a question format of the MCQs. The third one is emphasize higher level thinking. The fourth one is keep option length similar. There is the length of all the option should be similar, यानी कि जितना एक ज़्यादा डिस्क्राइब ना हुआ हो दूसरा ज़्यादा शॉर्टर ना हो, सबकी लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए. बी ग्रामेटिकली करेक्ट. अवॉइड क्लू टू द करेक्ट आंसर. कोई क्लू नहीं होना चाहिए कि उससे इजीली उसको अंडरस्टैंड करें, लाइक या इस आपके इजी होने चाहिए. अवॉइड नेगेटिव क्वेश्चन. यूज ओनली वन करेक्ट ऑप्शन. गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस and use only a single clearly defined problem, as well as avoid all of the above option or none of the above options. Like हम बहुत सारे MCQs देखते हैं जिसमें all of the above और none of the above given होता है, या तो उस में given होनी चाहिए जो जिसमें बिल्कुल ही क्लियर हो कि ऑप्शन जो है नन ऑफ द अबव आप इसलिए गिवन कर देते हैं कि कोई बात नहीं है क्योंकि डिस्ट्रैक्टर है. एज अ डिस्ट्रैक्टर आप उसको पुट कर सकते हैं, लेकिन आप सिमिलर आंसर दे दें और उसमें आप ऑल ऑफ द अबव कह दें तो वो लर्नर के लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा. और इसमें काफ़ी सारे जो राइटर हैं उन्होंने इसको कहा है कि ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, स्पेसिफिकली इन द MCQs. And don't use MCQs when other item type are more appropriate. Now there is supply type item or the completion. So student fill in one or more blank in a statement. Example, the capital city of Pakistan is Daesh. So completion item good for knowledge comprehension and high level outcomes. So there are some steps for writing completion item, like use a single word answer, as well as state problem to be examined, and the teacher should have to use precise and accurate language. Don't use a senseless statement to which are very blur in the sense that the other attempt the other person who attempt the test are not easily understand the statement. So these are very worthless statements
which are which have no sense and indicate unit of numerical answers. The next is supply type item essays. So there are two. The first one is restricted responses and the second one is extended responses. In restricted responses, you can easily describe the similarities and differences in the life of the people living in Islamabad or Faisalabad. So these are the restricted because we are talking about here in only two cities, the Islamabad and the Faisalabad. But the extended response here identify as many different ways to generate electricity in Pakistan as you can. So there are multiple ways as well as we are talking about the whole city, the whole country. So Pakistan, are the where you can generate the electricity, why, what are the different ways. So you can easily response to this question because this is the extended response. There are tips for writing essay. A good essay item question is of essential knowledge and ask sensible questions as well as preference for specific question, use relevant item for each domain, avoid a choice among optional question and test the question by writing an ideal answer to it as well as specify the time allotment for each item. And the last one is divide a question into separate component when there are obvious multiple question or pieces to the intended response. Now there is administering a test. The first one is test assembly. So group together all the item of similar format. पहले सबको gather कर लें जो भी similar format के हैं. Arrange test item from easy to hard. यानी कि एक arrangement होनी चाहिए कि first one जब test attempt कर रहे हैं तो learner को ये ना लगे कि वो hard को attempt कर रहे हैं. एक arrangement होनी चाहिए, पहले easy होना चाहिए उसके बाद hard, उसके बाद उससे hard होना चाहिए तो वो easily उसको इजी होके उसको करेंगे. The next is space the item for easy reading. Keep item and their option on the same page. यानी कि जो भी आपके पास ऑप्शंस है उसके वो सिमिलर पेज पर होने चाहिए. सिमिलर पेज पर होने से जो लर्नर है जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो उसको इजीली गाइडेंस मिलेगी और वो इजीली उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे. The next is a position, illustration, table, charts, pictures, diagram or map near the description. जो भी आपके पास डायग्राम है, पिक्चर है, चार्ट है वो लर्नर जो है वो उसको देख के अपने डिस्क्रिप्शन को रीड करेगा तो वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अगर उसमें डिस्ट्रैक्शन हो एक पेज के ऊपर पिक्चर हो दूसरे पेज के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन हो तो वो उसको इजीली मैच नहीं कर पाएंगे कि किस चीज़ के बारे में क्या बात हो रही है. उसके लिए हार्ड होगा. द नेक्स्ट इज आंसर कीज मस्ट बी चेक केयरफुली. यानी कि आंसर की जो है वो एक की पॉइंट है यहाँ पर क्योंकि एक टेस्ट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अपना की आंसर कीज जो है वो उसको लेके अपना आंसर चेक करेंगे. तो अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो उनको अपना रिजल्ट क्लेरिफाई नहीं होगा. The next is provide adequate and proper space for name and date. अगर नेम और डेट के लिए स्पेसिफिक स्पेस हो, प्रॉपर एक स्पेस गिवन हो तो वो एरर नहीं होगा उसमें क्योंकि जो भी टेस्ट को चेक कर रहे हैं वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसका टेस्ट वो चेक कर रहे हैं एज वेल एज जो अपना नाम लिख रहे हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट को उनको भी इजी होगा कि वो अपना स्कोर जो है वो इजीली चेक कर सकते हैं क्योंकि उनका नाम जो आइडेंटिटी है वो गिवन है स्पेसिफिकली. द नेक्स्ट इज टेस्ट डायरेक्शन मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर. जो भी आप टेस्ट डेवलप कर रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो प्रिसाइज हो
और क्लियर हो, विजिबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो, तो वो इजीली टेस्ट अटेम्प्ट जो कर रहे हैं वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज टेस्ट मस्ट बी प्रूफ रीड टू मेक इट एरर फ्री। अगर आपका जो टेस्ट है वो आपका प्रूफ रीड नहीं है तो आप इजीली लर्नर को देकर उनके स्कोर को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिफरेंस आएगा। आपका जो की होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो आपने टेस्ट प्रिपेयर किया है वो डिफरेंट होगा, उसमें एरर हो तो वो इजीली कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपने रिजल्ट्स को, अपने स्कोर को। सो इस टीचर जो डेवलप कर रहे हैं टेस्ट को, उनको एरर फ्री करना चाहिए, उनको प्रूफ रीड की ज़रूरत होती है कि वो अपनी बिहाफ पे उस चीज़ को, एरर को फ्री करे, एरर को ख़त्म करे। The next is make all the item unbiased, like जेंडर कल्चर हो गया कि उसमें अनबायसनेस होगी तो वो अटेम्प्टर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट को वो इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसमें कोई नेगेटिविटी ना हो। सेकेंड इज reproduction of the test. Practical step for printing. Manage printing if test taker are large in number. जो भी टेस्ट टेकर है अगर वो ज़्यादा हो तो आपको मैनेज करनी चाहिए, अपनी प्रिंटिंग को प्रॉपर कॉपीज बनानी चाहिए। द नेक्स्ट इज मैनेज फोटो कॉपी फ्रॉम अ प्रॉपर न्यू मशीन, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फोटो कॉपी नहीं बनाएंगे तो वो विजिबल नहीं होंगे, और विजिबल नहीं होंगे जो टेस्ट टेकर हैं वो इजीली उसको रीड नहीं कर पाएंगे। सो उनका जो स्कोर का क्राइटेरिया है या जो स्कोर उन्होंने गेन करने हैं वो गेन नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज यूज गुड क्वालिटी ऑफ द पेपर इन प्रिंटिंग। जो आप पेपर यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी जो प्रिंट है वो विजिबल हो, क्लियर हो, तो वो जो टेस्ट टेकर है वो इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाए और वो जो आप उनको पेपर दे रहे हैं उसमें विजिबल हो हर क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज रिटेन ओरिजिनल टेस्ट इन योर ओन कस्टडी। जो भी आपका ओरिजिनल टेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए, जो भी फोटो कॉपी वगैरह है या जो भी अदर टेस्ट है वो आप दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल आपके पास हो तो आप उसमें अगर कोई भी क्लेम हो तो आप इजीली उसको क्लेरिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल आपके पास होगा। द नेक्स्ट इज बी केयरफुल while मेकिंग सेट्स ऑफ द टेस्ट। जो भी आप टेस्ट के सीट्स बना रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं, यानी कि जो जितने आपके टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनकी आपको पता है कि इतने कॉपीज बननी है तो वो उसको उस टाइम आपको केयरफुल होना चाहिए, यानी कि वेस्टिंग पेपर भी ना हो इजीली। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपकी जो जो आप सेट्स बना रहे हैं टेस्ट की वो सबके लिए हो, यानी कि उसमें शॉर्ट कम पेपर ना पड़ जाए। द नेक्स्ट इज मैनेज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द टेस्ट। नाउ the third is administration of the test. Maintain a positive attitude of the for achievement. जो भी आपका अचीवमेंट के लिए आपका वे होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव लुक होनी चाहिए। मैक्सिमाइज अचीवमेंट मोटिवेशन। जो आपकी मोटिवेशन जो है वो आपको मैक्सिमाइज करनी चाहिए ताकि जो टेस्ट टेकर है वो उसको वो भी मोटिवेट हो कि वो इजीली टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट इज इक्वलाइज एडवांटेजेस टू ऑल द स्टूडेंट। सबको इक्वल एडवांटेज देनी चाहिए। द नेक्स्ट इज प्रोवाइड इजी कंफर्टेबल एंड प्रॉपर सीट्स, ताकि जो टेस्ट टेकर हैं वो इजीली अपना टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर पाए। The next is provide proper system of light, temperature, air and water. जो भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको एक अच्छा environment मिलना चाहिए, उसमें एयर होनी चाहिए, वाटर होना
और टेम्परेचर का, लाइट का होना मस्ट है, एज वेल एज सीट्स का होना भी मस्ट है। क्लेरिफाई ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्लेरिफाई करना चाहिए। रिमाइंड द स्टूडेंट्स टू चेक देयर कॉपीज, अपने स्टूडेंट्स को ये रिमाइंड कर पाए कि वो अपनी कॉपीज जो है वो चेक करें कि जो उनके की आंसर है वो भी उनके पास विजिबल हो उसके आंसर। The next is monitor student continuously. Continuously means एक टीचर जो है, एक सुपरडेंट जो है वो अपने स्टूडेंट को, अपने लर्नर को मॉनिटर करे। अगर किसी को कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है या फिर कोई भी डिस्टरबेंस हो तो उसको वो ख़त्म करें। द नेक्स्ट इज मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करें, वही बात जो मैंने की। गिव टाइम वार्निंग प्रॉपरली, यानी कि एक प्रॉपर टेस्ट टाइमिंग होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो कम्पिटिटिवली और इजीली उस टेस्ट टाइमिंग के अंदर अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर पाए। कलेक्ट टेस्ट यूनिफॉर्मली, सबका टेस्ट सेम होना चाहिए। Count the answer sheet, seal it in bag and hand it over. जो भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपके शीट जो है और जो आपके लर्नर है उनकी जो लेंथ है वो जो उनकी तादाद है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि आपके स्टूडेंट ज़्यादा है, आपके पेपर कम पड़ जाए तो फिर जो उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया वो अ, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट पेपर्स और कम का पीस की वजह से। सो आपके ये दोनों प्रॉपर पूरे होने चाहिए। द फोर्थ वन इज टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। अब इसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट्स नीड टू फॉलो डायरेक्शन केयरफुली। जो भी आप स्टूडेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं वो उनको चाहिए कि वो इजीली डायरेक्शन को फॉलो करें। स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू बजट देयर टाइम, कैसे उनको अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। स्टूडेंट नीड टू चेक देयर वर्क, उनको अपना वर्क जो है वो चेकआउट करना चाहिए। रीड द एंटायर टेस्ट आइटम एंड पॉसिबल आंसर की answers very carefully. Read the easier question first. You can easily read it by yourself. Students need to make educated guesses. Use a test item format for practices. Review the practice item and answer choice with student practice using answer sheets. The fifth step is prevent cheating. अब चीटिंग को कैसे रोका जाए? चीटिंग के लिए स्पेशल प्रिकॉशन को यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, एज वेल एज कर सकते हैं कि जो भी सफिशेंट स्पेस आप टेस्ट के बीच में रख सकते हैं वो रख ले ताकि इजीली वो अपना वर्कआउट करें, और इस तरह से गैप ज़्यादा होगा तो वो चीटिंग नहीं कर पाएंगे। The next is if scratch paper is used, have it turned in with the test. And next is testing or must be watched carefully, यानी कि प्रॉपर मॉनिटर किया जाए स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, ताकि वो चीटिंग जो है वो ख़त्म हो। टू फॉर्म ऑफ द टेस्ट कैन आल्सो बी यूज, दो फॉर्म होनी चाहिए टेस्ट के यूज। स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट, जो आप सीट अरेंज कर रहे हैं उनकी स्पेशल अरेंजमेंट होनी चाहिए जो आपके स्टूडेंट है वो इजीली गैप के साथ और इजी होकर वर्कआउट करे, अपना अपना काम करे। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना वो अपने टेस्ट के ऊपर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे। सो अपने वर्क, अपने टाइम के ऊपर अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेंगे। क्रिएट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द वैल्यू ऑफ द टेस्ट। जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप जो टेस्ट मेंटेन कर रहे हैं, जो आपका टेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो किसी भी नेगेटिविटी का असर ना हो, ताकि वो इजीली अपना टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर पाए। सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज द वेरी important part of the test
Now, the next one is scoring the test or essay. Prepare a scoring key in advance. Outline of the acceptable answer and main feature to answer of the answer and the weight assigned to each, like content 4 points, comprehensiveness to logical organization to irrelevant material, deduct up to 2, misspelling of technical terms, deduct to half or to 2, major grammatical mistake 1 to 2 points, and ignore poor handwriting, misspelling of non-technical terms, and minor grammatical errors. So use an appropriate scoring method, point or rating. Read a sampling of the paper to get a feel of the quality of the answer, as well as score one question through all of the paper before going to the next. The next is adopt a definite policy. Reading factors which may not be relevant to learning outcome being measured and score the paper anonymously. यानी कि आपका जो पेपर है वो आप anonymously उसको स्कोर किया जाए, उसको जो प्रॉपर मेथड है उसको फॉलो अप कर लेना चाहिए. Scoring with example like test item, name and describe 5 of the important factor of unemployment in Pakistan, and these have 10 points. So Arabic scoring criteria, 1 point for each of the factor name to maximize of 5 point, 1 point for each appropriate description of the factor name to a maximum to of 5 point, no penalty for spelling, punctuation or grammatical error, and no extra credit for more than 5 factor name or describe. Unnecessary information will be ignored. So, how a test can be made effective through planning and administrating it. This is upon you.